हाँ जी, कोई बताइए। सर एक्स अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और हम हाँ एक्स को डिस्कनेक्टेड तब कहेंगे जब if अगर उसमें कोई दो ओपन सबसेट एग्जिस्ट करे यू और वी एक्स में, यू ओके भी यू भी नॉन एम्प्टी हो वी भी नॉन एम्प्टी हो। ओके, रुकिए मैं लिखता जाता हूँ जो आप करें। डिस्कनेक्टेड इफ आपने कहा देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स, यू एंड वी open और subsets एक्स u एक्स and में v of x such that सच नंबर एक। नंबर सर यू एम्प्टी नॉन एम्प्टी होना चाहिए और वी नॉन भी नॉन एम्प्टी एम्प्टी होना होना चाहिए, ये भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ओके, और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए फाई। बहुत बहुत सही। और एक्स को हम उनके कंबाइंड यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ यू और वी। ओके ठीक है। तो या अगर ये तीन चीज, ये चार चीजें हैं, ये ओपन सबसेट हो, साथ में नॉन एम्प्टी हो, दोनों डिसजॉइंट हो, और वो एक्स को कवर करे, तो हम एक्स को डिस्कनेक्टेड कहते हैं। तो सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ set theory, if u intersection v is empty and x equal to u union v, this implies u equal to x minus v and v equal to x minus u. Because u and v both are open, these two are open. Okay, so this implies, so since u is the complement of v and v is the complement of u, this implies u and v are closed sets. U and v are closed sets. Okay, so if a space X is disconnected, you will get two non-empty proper, at least two non-empty proper closed and open sets. Okay, clopen sets. So ऐसे सेट जो both open and closed हैं उसे हम clopen set कहते हैं. Okay, so if we have seen that if X is connected, we have seen that if connected, then the only clopen subsets or clopen sets of X are empty set and exit set. This is what we have seen. Okay, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी हम और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कनेक्टेड सेट की। करेक्ट, नाउ तो आप लोगों को मैंने S1 और S2 के बारे में बताया था ना, याद है आपको? What was S1, what was S2? So let me call Sn is the unit here, unit sphere or unit sphere in Rn plus 1. Okay, so unit sphere in Rn plus 1 is nothing but x1, x2, xn plus 1, such that x1 square plus x2 square, so on up to xn plus 1 square, this is equal to 1. So in case of R2, we will get S1. S1 is nothing but the unit circle x1 comma x2, such that x1 square plus x2 square equal to 1. So you all know this is the equation of a circle in R2. Similarly, S2, the sphere x1, x2, x3,
x1 square, x2 square plus x3 square equal to 1. You all know this is equation of unit sphere. Okay. So what about S0? S0. S0 क्या होना चाहिए? सर एक पॉइंट होना चाहिए. हाँ, कौन से पॉइंट होंगे बताइए. सो S0 कहाँ पर होगा? देखिए Sn कहाँ पर था? Sn था Rn प्लस 1 में. तो S0 सबसेट होगा R का. ओके. All those x such that x square equal to 1. So what are all those points? X in R. बताइए कौन से पॉइंट है वो? सर 1 और -1. -1 and 1. Very good. Okay. So you see this S0 is not connected in R. Okay. So S आपने ये देखा था subset. So take y equal to S0 and you have seen a subset y of x is disconnected. Okay. If there exists if okay, let me say if y is disconnected as y is disconnected in subspace topology. Subspace topology, or sometimes you will say it is relative topology. Okay, this is you what you know. Okay, so here what we have, take y equal to S0. S0 is -1, 1 in subspace topology. Subspace topology coming from R, this set -1, 1 has discrete topology. Okay, so subspace topology on S0 is the discrete topology on. This part we have already seen. Okay, on S0. Correct. So therefore, from here, you see if S0 has a discrete topology, then you can write S0 as union of two non-empty disjoint open subsets of S0. So S0 can be written in as a union of these two. So this implies S0 is not connected. Correct? Is this okay? Yes, sir. What about S1? Is S1 connected? Is S1 connected? Is Yes, sir. Connected होगा. क्यों? Okay, so for S0 we have this is -1, this is 1, and for S1 we have this circle in R2. Okay, so when you imagine S1, so it is a circle in R2. You can definitely or intuitively you can see it that this is connected, but you have to give a proof of this. Okay, you have to give a proof of this. Correct? So let us, we will see a proof in say in the end of this lecture. We will see a proof which says that S1 is connected. In fact, Sn is connected for all n greater than 1.
Okay, means S2 is also connected. S2 means this sphere. In R3, this is S2, this is S1, this is also connected. Okay, let's see why this is true. For this, we first see we first hello सर ये किसी को कोई दिक्कत है? ये सर S3 एक मिनट रुकिए, S3 में नहीं बना पाऊंगा क्योंकि S3 के लिए हमको R4 में जाना पड़ेगा। मैं एटमोस्ट जो फिगर R3 तक जा पाऊंगा ना, R4 में नहीं बना पाऊंगा। आप भी नहीं बना पाएंगे। बस केवल आप सोच सकते हैं ठीक है कुछ होगा ऐसा, मीन्स है ना। ओके सर। अब फिर आप मेरे को बोलेंगे फिर S5 बनाइए, S6 बनाइए, तो ये नहीं S1 सर्किल होता है, S2 स्फीयर होता है, S3 क्या होता है सर? S3 R4 में जब हम 4 डायमेंशनल स्पेस कोई होगा उसका यूनिट स्फीयर जो है वो S3 है, ठीक है। यस ओके सर। हम कोई भी चीज इमेजिन कर सकते हैं या हम कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं, वो केवल और केवल R3 के लिए, R3 तक ही ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोग जीते हैं। हम लोग हर चीज 3 डायमेंशनल में देखने की आदत है हमें, है ना। यस सर। तो उसके बाहर इमेजिन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो S3 को मैं आपके लिए नहीं बना पाऊंगा। हाँ, लेकिन आप अगर विकिपीडिया सर्च करेंगे तो आपको इसको बनाने के बहुत सारे तरीके मिलेंगे, आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमारा टास्क है कि ये कनेक्टेड है, इसको प्रूफ करना है, जो कि हमें इंट्यूटिवली दिख भी रहा है कि भैया ये कनेक्टेड तो है, दिख रहा है हमको। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है, जो चीज दिख रहा है उसका प्रूफ भी होना चाहिए ना। लेट अस so build some machinery to write a proof that S1 is connected or Sn is connected. So for that first result, तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अब नोट्स नहीं दिया करूंगा, मैं जो भी है मैं यहाँ पर लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, आपको वो नोट करना है। जो भी लोग लेक्चर मिस करेंगे तो वो उन करेक्ट, ठीक है ना? यस सर। ओके सर। ओके, सो result is if X is disconnected, then there is a continuous, so continuous surjection. So sir, अगर मैं continuous surjection कह रहा हूँ, इसका मीनिंग है continuous and surjective map, okay, F from X to S0. So you all know what S0 is. S0 is -1, 1. Okay. So अगर हम ये प्रूव कर लेते तो आप देखोगे कि S0 को -1, 1 की जगह हम कोई भी 2.23 ले लें या फिर हम 0.1 ले लें या कोई भी नंबर ले लें, 100 and 1 lakh कुछ भी ले लें, तो वो कोई भी 2 पॉइंट सेट आप विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी रिप्लेस कर सकते हैं। देयर इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट S0, क्योंकि हमने एक टास्क रखा है कि जो यूनिट सर्कल और यूनिट स्फीयर है उसको कनेक्टेड दिखाना है। तो इसके लिए हमने देखा S0 तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बाकी कनेक्टेड है, ये हमें शो करना है, तो इसीलिए हम S0 ले हुए हैं, ठीक है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट सेट से, आप 0.1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं S0 को, ओके। तो देयर इज nothing special about -1, 1. So अभी हो क्या रहा है ये देखते हैं।
So if X is disconnected, this means X is something like this. This is one open set, this is another open set, okay? Or there might be 3 or 4 open sets. Say this is X. X is union of these open sets. And you have, here you have -1 and 1. Okay, so what we will do, so this is our X. तो अब हमें एक सेट बनाना है, तो हमें एक मैप बनाना है, तो हमें मान लो ये आपके पास U है और ये दोनों का यूनियन में V ले लेता हूँ. So what I will do, I will intuitively we can see, मैं इस U को -1 में मैप कर देता हूँ. ओके, ये V को 1 में मैप कर देता हूँ. ठीक है, ऐसा कुछ करूंगा. अब ऐसे तो मैं केवल ये बोल पाऊंगा कि भैया ये जो मैप है ये ऑन टू तो है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है. क्यों? क्योंकि एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास एक इमेज आ रही है, और ये ऑन टू है क्योंकि एस नॉट के हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास प्री इमेजेस हैं. लेकिन ये कंटिन्यूस क्यों है? ये कंटिन्यूस क्यों है, ये जरूरी बात है. तो कंटिन्यूटी भी आप देख पा रहे होंगे बहुत इजीली कि कोई बताएगा ये कंटिन्यूस क्यों है ये मैप? हेलो, क्योंकि सर उसके हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए प्री इमेज है ना. नहीं, कंटिन्यूटी की वो तो ऑन टू का है ना, कि हर कोडोमेन के हर एक पॉइंट के लिए एक प्री इमेज हो. ये ऑन टू की डेफिनेशन है. मैं पूछ रहा हूँ कंटिन्यूस क्यों, कंटिन्यूटी कहाँ से आई? ओके, ये जो मैंने फिगर बनाया ये सभी को समझ में आया ये क्या हो रहा है? जो फिगर बनाया है इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये सर ये x को हम ऐसा क्यों ले रहे हैं सर? क्या ये x को हम ये सबसेट पे जो ये फिगर अच्छा, ऐसा क्यों ले रहे हैं? ऐसा क्यों ले रहे? कोई बताएगा एक्स को हम ऐसा क्यों ले रहे हैं? ओके, बिकॉज एक्स डिस्कनेक्टेड है. ठीक है, बिकॉज एक्स इज डिस्कनेक्टेड, since x is disconnected. Okay, so this means there exists non-empty open subsets, non-empty disjoint open subsets u and v of x, okay, such that u union v equal to x. ओके, मैं डिसजॉइंट पहले कह रहा हूं तो u इंटरसेक्शन v इज एम्प्टी गिवन है, एंड बोथ u एंड v आर नॉन एम्प्टी. ओके, सो इसीलिए मैंने इसको ये वाला इसको u बोला था और इन दोनों को एक साथ लेके v बोल दिया था. अगर आपके पास मान लो एक और ऐसा कुछ होता है कंपोनेंट, तो आप इस पार्ट को u बोल दीजिए और इसे -1 में मैप करा दीजिए. आप किसी को भी कहीं भी मैप करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक साथ दो जगह मैप करें. Now we define f from x to s naught. S naught is -1, 1. Okay, how do we define this? Fx equal to 1 whenever x belongs to u, -1 whenever x belongs to v. Okay, this is a well-defined map because x is u union v और कोई एलिमेंट है नहीं. So this means f is surjective. It is clear, okay, clearly f is surjective. So
how can we see the continuity of F? अभी कोई बताइए, बहुत इजी सा है, हमें मालूम है एस नॉट में जो ओके कंटिन्यूअस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसके बाद हमने कंटिन्यूटी के लिए बहुत सारे इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस पढ़े हैं, कैरेक्टराइजेशन, जिसमें से एक था एफ इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स इफ इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स। पढ़ा था ये? इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट, inverse image of open sets is open. Yes sir. So what are all open sets in S naught? What are all open sets in S naught? Okay, तो फिर से आप लोग S naught क्या है? -1, 1, इसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है बताइए? डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? फाई एक्स यहाँ पर S naught है, x S naught सिंगलटन -1 सिंगलटन 1. Yes sir. Okay, so these are all open subsets of this space S naught. Okay, so what is F inverse of V? This is V which is clearly open in X. Yes What is sir. F inverse of S naught? This is whole of X because this map is surjective, which is clearly open. Okay, so what about F inverse of -1? U. ये क्या है? V. Okay, Yes, and sir. you know V is open in X. Yes sir. What is F inverse of 1? U. This is also open in X. So this means inverse image of each open set is open. This implies F is continuous. Okay? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ? No, sir. Okay. Good. Now, another theorem. The theorem is एक मिनट ये थोड़ा छूट चले हो गए. Next result. सर क्या ये होम्योमॉर्फिज्म होगा सर? क्या? सर ये जो क्या फंक्शन है होगा? ये जो फंक्शन है सर, ओके, होम्योमॉर्फिज्म होने के लिए क्या जरूरी है बताइए? सर ये ओपन होना चाहिए सर. एफ ओपन होना चाहिए और तो ये सारी कंडीशंस हैं. एक और बचती है, एक और बचती है, कौन सी है वो? हेलो, तो ये एफ इनवर्स एक्स नॉट टू एक्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए सर. पहले एफ इनवर्स एग्जिस्ट तो करना चाहिए, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब F11 भी होना चाहिए ना. अगर इस U में आपके पास, इस U में बहुत सारे एलिमेंट्स हों, वो सब -1 को मैप कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये 1 1 नहीं है ना. यहाँ पर भी आप देखिए दो ओपन सेट्स मैंने बनाए हैं, ये 1 पर मैप कर रहे हैं, तो इट मींस F नीड नॉट बी 1 1. सो वो 1 1 नहीं है तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो आप
एफ इनवर्स कंटिन्यूस कैसे कहेंगे, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहली बात एफ बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मीन्स इट इज 1 1 ऑन 2 और यू कैन से इट इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। तो आंसर है नीड नॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, suppose we have two suppose x and y are two topological spaces where and x is connected, okay, x is connected. Let f from x to y be a continuous function, okay, then fx, the image of x under f, or you can say range of is connected, okay. So in other words, what we can say is continuous image of connected space is connected. तो इसका मतलब आप कोई भी कंटिन्यूस मैप लो, एक कनेक्टेड स्पेस से उसका जो भी इमेज आएगी वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो let us prove this. So I'll prove in a particular case. So let me take fx equal to y. Okay, so here x and y are two topological spaces where x is connected, and suppose this is continuous surjection. Okay, continuous surjection means it is continuous and on to, this means y equal to fx. Okay, and given that x is connected. So our claim is y is connected. Claim is y is connected. So assume that y is not connected. Assume that y is not connected. Assume on the contrary that y is disconnected. So then if y is disconnected, so we can use this theorem. Which theorem? This theorem. Whenever y is disconnected, there is a continuous surjective map from y to S naught. So this means there exists a continuous G from y to S naught such that G is continuous and surjective. So now we have two maps, one from x to y, which is continuous and surjective. Another is from here to here, which is again continuous and surjective. So let us take their composition. This is a map from x to S naught. This is both continuous and surjective. So GOF is continuous and surjective. So here what you get is you got a map from x to S naught, which is continuous and surjective. So now I should have proven it here, but I will prove now. Okay, I will prove it at that place. So what should I have proven here is this thing is if and only condition. Okay, if x is disconnected, then there is a continuous surjection f from x to S naught,
and vice versa. If there is a continuous surjection from X to S naught, then X is disconnected. So since I have not proven that part here, so let me prove it here. Okay. So we got this. So our claim now is X. So we will prove that X is, we will show X is disconnected. Okay. And because here you see this X was connected and we are getting X is disconnected, this means our assumption that Y is disconnected is wrong. Therefore, Y should be connected. So let us prove this part which will be a contradiction. Okay. So what we have is, we have a map GOF from X to S naught. You all know S naught is -1, 1. So take inverse of -1, inverse image of -1, call it, okay, inverse of 1, call it G of inverse, call it V, inverse of -1. So you know, in S naught, both this singleton and this singleton, these are open. So both 1 and -1 are open in S naught, and GOF is continuous. GOF is continuous. Therefore, their inverse images, they are open in X. So since GOF is continuous, and 1, -1 are open in S naught, this implies GOF inverse -1 and GOF inverse 1. So this is U, this is V, sorry, this is V, this is U, both are open. Is there any doubt? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं प्रॉब्लम है, वेरी गुड. Again, since GOF is surjective, this implies GOF inverse of -1, 1. This is X, okay? This is X. And you know, this is nothing but GOF inverse -1 union GOF inverse 1, which is nothing but U union V. So this implies X equal to U union V. Okay. And Yes. you all, you have, and you know, you have to prove that U intersection V is empty. We will show this as well. Okay. Suppose there exists some X naught in U intersection V. This implies f of X. So this implies X naught belongs to U and X naught belongs to V. This implies X naught belongs to U and X naught belongs to V. So from here, GOF X naught, this would be, and from here, what it would be. So please complete this. So when X belongs to U, what is GOF X naught? So your U is this. अगर कोई पॉइंट U में है, then what would be its image under GOF?
1 होगा। 1 होगा, बहुत बढ़िया. So this is 1. What about V? If something is in V, what would be its image under GOF? -1. -1. So since X naught belongs to both U and V, and so this is -1. But you know GOF is a true function. एक फंक्शन है GOF, तो x नॉट की एक सिंगल इमेज होनी, यूनिक इमेज होनी चाहिए. फ्रॉम हियर यू गेट 1 इक्वल टू -1, व्हिच इज ए कंट्राडिक्शन. ओके, thus what you get is wait a minute. So this implies this cannot belongs to, so this cannot be a non-empty intersection. So this implies U intersection V is empty intersection. Okay, so your proof U intersection V was empty. You assume that this is non-empty, therefore there exists some element X naught in U intersection V, and you get a contradiction. So this implies U intersection V is empty set. Is this okay? Yes. Yes, sir. Okay. So what you get is you got two non-empty disjoint open sets U and V. They cover X. Okay. So this implies X is disconnected. But this is again a contradiction, because what we have taken was X is connected. Okay. So this implies this is a contradiction. And therefore our assumption was wrong. What was our assumption? Our assumption was Y is disconnected. Assumption was wrong. And hence Y is connected. Okay. Is this correct? Yes. I hope Yes, it is sir. correct. Okay. Now we give the answer for S1 is connected. Okay. So okay, so before this, good. तो अभी हमें क्या करना है? We have to prove that S1 is connected. So we will use connectedness of R. Okay. If you remember, yesterday we have proven that R with the usual topology is connected. Do you remember this? R is connected. ये हमने देखा था कल. याद आ रहा है? Yes. Open interval with R. हाँ, open interval में भी every open interval is also connected. So in fact we have proven that R is connected. Let me show you. Yeah. So at this place हमने ये प्रूव किया है कि ये वाला पार्ट R with usual topology is connected. आपने माना था कि वो कनेक्टेड नहीं है, तो दो ओपन सेट मिलेंगे जो डिसजॉइंट होंगे, जिनका यूनियन R होगा. ओके. और आपको मालूम है कि अगर हमारे पास R डिस्कनेक्टेड है तो जो भी दो ओपन सेट मिल रहे हैं वो क्लोज्ड भी हो जाएंगे. ये क्लोज ओपन सेट मिलेगा. देन वी यूज ट्राइकोटोमी लॉ. वी
we consider 2 points, A in U, B in V. We took this intersection, okay, W, and we use completeness property of R, and we infer here that W has a supremum, call it C. Then we consider another intersection, W1, which is this intersection, and we prove that this C is in fact infimum of V. But we know V is closed as well, so it contains its infimum. So this C belongs to V and C belongs to U as well. So this was a contradiction that U and V are not disjoint. Okay. So therefore R is connected. So we will use this. So अब हमको करना है S1 connected, हम जानते हैं R connected है. So what we do, we just give a continuous function. So construct a continuous surjective map from R to S1. If you give me a such map which is continuous and surjective, then by this theorem that continuous image of a connected set is connected, or continuous image of a connected space is connected, we are done. So can you give me a map from R to S1 which should be continuous and which is surjective? हमने ये मैप देखा है, हमने ये मैप देखा है. क्या आप बता सकते हैं कौन सा मैप है वो? याद आ रहा कुछ? आपको याद है ये वाला मैप हमने देखा था, cos 2 pi something, cos 2 pi t comma sin 2 pi t. याद है? उस केस में हमारा इंटरवल क्या था? उस केस में 0,1 हम ले रहे थे, 0,1. यहाँ पर जब हम r ले लेते हैं तो 2 पाई लिखने की जरूरत नहीं, cos t sin t लिख दीजिए. ओके, cos t comma sin t. T goes to cos t. So define a map f from here to here such that ft equal to cos t comma sin t. Okay, this is a continuous surjective map, and you know R is connected. R is connected, therefore S1 is connected. Correct? So ये जो मैप है उसको और आप इजी वे में देख सकते हैं. ये अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थोड़ा सा ज्ञान है तो ये EIT मैप है, which is cos t plus I sin t. And you know in complex analysis this EIT or EI theta is nothing but this circle. Okay, तो आप इसको लिख सकते हैं, this is real part, this is imaginary part. Okay, and you all know EIT, this function t go to EIT is continuous, so therefore this is also continuous. So this is one way to prove that f is continuous, and then it is clearly it is surjective, and hence S1 is connected. S1 is connected because R is connected. Okay.
So you may also prove this like okay, अभी आप इसको प्रूव करने का एक और तरीका आपके पास हो सकता है। एक और तरीका क्या हो सकता है, वो ये है, आप जानते हैं R और R2, हमने यहाँ R का यूज करके किया, अब R2 का यूज करके बताए। अगर मैं R2 में से ये पॉइंट हटा दूं, जीरो वाला, so means R2 minus 0, will that be connected? Will that be connected? आपको मैंने क्या क्या बोला, R में से या R2 में से ये 0 0 वाला पॉइंट हटा दो, 0 0, दिस इज O। अगर इसको हटा दूं तो क्या R2 minus, so this is called punctured plane, will this be connected? ओके, इसको फिर से इंट्यूटिवली आप देखिए, R के केस में देखिए, R में if I remove this point origin, whether R minus 0 is R minus 0 connected? And then is R2 minus 0 comma 0 connected? बताइए। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? डिस्कनेक्टेड होगा सर ये। कौन सा वाला? सर दोनों ही डिस्कनेक्टेड होंगे। तो प्रूफ दीजिए दोनों डिस्कनेक्टेड होने के लिए। सर एक को हम यू ले लेंगे और एक को वी ले लेंगे। किसको यू ले लेंगे? मतलब एक ये दो अलग अलग सेट है। हाँ, देखिए, ये पहले किसका आंसर दे रहे हैं आप? पहले हम R2 वाले का दे रहे हैं। R2 वाले का, R2 वाले के लिए दीजिए। चलिए, इसके लिए U और V बताइए। सर अगर वो पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो फिर वो 4 उसमें पार्ट में डिवाइड होगा। पॉइंट रिमूव करने पर कितने पार्ट में? सर 4 आर, अच्छा, मतलब इस आर में आ जाएंगे ना फिर हम। अच्छा, एक काम करिए, आपने एक प्लेट लिया, प्लेट, ठीक है? आप ओके, थोड़ा नहीं सोचिए, सर। एक प्लेट, हाँ सर, सोच लीजिए, समझ गया सर, मैं गलत बोल रहा हूँ। आपने एक प्लेट लिया, उसमें एक छेद कर दिया, तो क्या वो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, छेद करने के बाद मीन्स कुछ पार्ट निकाल दिया आपने, एक पतला सा, एक बहुत छोटा प्लेट उसमें से निकाल दिया, प्लेट के अंदर में से एक बहुत छोटा प्लेट निकाल दिया, तो जो बचा हुआ प्लेट है वो कनेक्टेड होगा? होगा सर। होगा ना? ये आप इंट्यूटिवली सोचिए। अभी आप एक लाइन लीजिए, आर मतलब एक लाइन लीजिए, एक लाइन लीजिए, उसमें से एक पॉइंट रिमूव कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेंगे? हेलो सर। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सुभाष अग्रवाल सर। R माइनस 0 ये डिस्कनेक्टेड होगा सर। डिस्कनेक्टेड होगा, क्यों? अभी इसको आप ऐसे सोचिए, आपके पास एक थ्रेड था, या आपके पास एक धागा था, या फिर एक तार है, यस सर। ठीक है? उसको बीच में से काट दिया आपने, तो आपके यस पास सर। दो अलग अलग ये मिले ना, क्या कहते हैं उसे, दो अलग तार मिल जाए, मीन्स दो अलग डिस्कनेक्टेड पार्ट मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा एक पॉइंट निकालना, एक प्लेट में से एक पॉइंट निकालेंगे तो आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे उसको ना, ये सर। ठीक है? R माइनस 0 को हम हाँ, दो ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं ना सर? हाँ लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन और 0 0 कॉमा इन्फिनिटी, ये दोनों डिसजॉइंट है, इनका यूनियन R माइनस 0 है। So clearly R minus 0 is not connected. Okay. So from above theorem, so if I ask you, give a continuous
surjective function from R to R minus 0. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Can you give me this function? Hello? सर क्वेश्चन क्या है सर? Give an example of a continuous surjective function from R to R minus 0. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंटिन्यूअस surjective function f from R to R minus 0. हेलो? यस सर. हाँ, बता सकते कोई फंक्शन ऐसा? सर ई बेस एक्स. अभी आपने को सर एक बात सर ई बताइए। एक्स. हेलो. ex तो अच्छा, ex आपने बोला fx equal to ex for all x in R. This is not a surjective map because -1 तो होता ही नहीं, ex is never -1. R minus 0 में -1 भी है ना, यस सर. तो ये तो सर्जेक्टिव नहीं है ना। आपको एक सर्जेक्टिव मैप चाहिए, देना है आपको। अभी आपने क्या थ्योरम पढ़ी थी? आपने क्या थ्योरम पढ़ा ऊपर? इससे जस्ट पहले क्या थ्योरम पढ़ी है? अभी अभी ये भूलिए मत, ये सब चीजें याद रखनी है, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। क्या है ये थ्योरम स्टेटमेंट? Continuous image of connected space is connected. ओके, तो अगर मान लीजिए कोई मैप एग्जिस्ट भी करता है R से R माइनस 0 में, जो कंटिन्यूअस है, सब्जेक्टिव है, तो उसका जो इमेज है वो R माइनस 0 है, तो ये कनेक्टेड होना चाहिए ना। अभी आपने थ्योरम पढ़ी कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, R is connected, this is connected, so by above theorem f of R should be connected. But f of R is R minus 0 because f is surjective map. This is not connected. So this means there does not exist any continuous surjective function from R to R minus 0. तो ऐसा कोई मैप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो आप एग्जांपल कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। Yes sir. तो दिस मीन्स, तो आपका आंसर होना चाहिए सर, देयर इज नो कंटिन्यूअस सर्जेक्शन फ्रॉम R to R minus 0 because R is connected and R minus 0 is not. Is this correct? Yes sir. Okay, so what we have learned today is connectedness is a topological property, is a topological property. So what does this mean? This means if we have a homeomorphism from X to Y, okay, whatever connected set you will take here, its image will be connected in Y. So this is what this is the
take away from today's lecture. Okay, any doubt? So if someone asks you, prove that connectedness is a topological property. So what topological property means? So it is invariant under homeomorphism. Okay, so it is invariant under continuous map. So connectedness is one such property. Okay, तो अब एक क्वेश्चन जो अभी हमने एग्जांपल्स देखे, जो भी हमने अभी काम किया, अभी आपने देखा f from x to s0. So इस s0 में this s0 was -1, 1. Okay, and you know in s0 we have subspace topology coming from R, which is nothing but the discrete topology on -1, 1. Okay, यहाँ पर आपके पास क्या discrete topology. So you prove that if x is disconnected, then there exists a continuous surjective map from x to s0. You prove this. So what about continuous maps? Okay, now we have two topological spaces, x and y are two topological spaces. Okay, x is connected, y is discrete. Y is a discrete space. Okay, y is a discrete space. Then what can you say about continuous map from x to y? So what can you say about f? f कैसे होना चाहिए? So this is an exercise for you. Please find all continuous functions f from a connected space x to a discrete space y. Okay, तो यहाँ पर आपको प्रूव करना होगा कि भैया कनेक्टेड है, तो आपको ये प्रूव करना है कि कंटिन्यूटी से आपको क्या मिलेगा, और आप यूज करिए इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सेट in y is open in x. Okay, ये इसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए. ठीक है, so once you get the answer of this question, then what are all continuous maps from R to Z? Here this Z is set of integers, this is set of reals. Okay, real numbers. So what are all continuous maps from a real number to the set of integers? Okay, I'll stop here. If you have any doubt or any question, please ask. हेलो सर, कोई डाउट है? हाँ बोलिए. सर जो फिगर दिए थे आप कल, वो होमोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए, कौन सा फिगर दिया था? हाँ मैंने याद आ गया मुझे, कौन सा फिगर दिया था. हाँ, मैंने ये दिया था और ये दिया था और ये दिया था और ऐसे कुछ दिया था ना. यस सर. हाँ, तो क्या ये कौन कौन होम्योमॉर्फिक होंगे, कौन से नहीं होंगे?
सर इसे बताइए सर, समझ नहीं आ रहा है। हाँ यही तो समझना है, ये मतलब आपके देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं, अगर उसकी उसकी मदद से आप इसको प्रूव कर पाते हैं या डिस्प्रूव कर पाते हैं या इसका आंसर दे पाते हैं, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं चीजें। आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चीजें नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, सर मैं मैंने डिफिनीशन आपको को हिंट इससे दिया था नहीं कि कर पा रहा हूँ सर। देखिए मैंने आपको एक हिंट दिया था कि मैंने बोला था कि आपको मैंने दिखाया है कि S1 माइनस 0, मैंने आपको शो किया था S1 माइनस अ पॉइंट दैट इज 0,1 is homeomorphic to the real line। ओके, वहां पर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, रियल लाइन एक ये लाइन थी ऐसे, और S1 माइनस 0 ऐसा कुछ था। ठीक है, अब इसको आप चेंज करके देखिए, इसकी मदद से ये बनाइए दूसरे ये सब चीजें। क्या, एक मिनट, सिंपल सी बात है ये, क्योंकि हम देखिए टोपोलॉजी में एक टोपोलॉजिस्ट के लिए ये चारों फिगर सेम है, बिकॉज दीज फोर आर होम्योमॉर्फिक। आप आपने एक रबर का एक रबर का बैंड सा या मीन्स एक रबर का कुछ स्ट्रिंग लिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, एट दिस प्लेस इसको आप खींचिए नीचे को, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है कि नहीं? यस सर। यही बनेगा। तो यहाँ से इधर पहुंचना बहुत इजी है। आप क्या कीजिए, या इधर से दोनों में से किसी एक की ओर, आपने एक जगह बनाया, दूसरी जगह ये लिया, तो आप प्रोजेक्ट कर दीजिए इसको यहाँ प्रोजेक्ट कीजिए, ऐसे ऐसे ये सब, ये मैप आप बनाए, ये सब पॉइंट यहाँ प्रोजेक्ट कीजिए, ये पॉइंट यहाँ प्रोजेक्ट कीजिए। ठीक है, और ये सब मीन्स इसकी इमेज ये पॉइंट है, इसकी इमेज ये पॉइंट है, तो you can always get a continuous map from this to this। सिमिलरली अब आपने उसको, ये छोटे को बड़े से होमोमॉर्फिज्म दिखना है, मान लो इसकी लेंथ 10 है, इसकी लेंथ मान लो 15 है, तो आपको मैंने एक चीज बोला था भैया कि 0 to 10 और 0 to 15, so this is 0 to 10, this is 0 to 15। okay, so you can always scale an interval। okay, तो आपने क्या करना है इसमें, x goes to 1.5x, तो आपने उसको स्केलिंग कर दी। ठीक है, तो ये एक आपने क्या, आपके पास एक ये रबर का स्ट्रिंग थी, आपने उसको खींच दिया, 1.5 गुना खींच दिया, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो दिस टू आर होमोमॉर्फिक। फिर तीसरा वाला जो लास्ट वाला है, आपने जब ये खींच दिया है तो आपको इस जगह पर इसको यहाँ बांध दीजिए, इसको यहाँ कहीं पर बांध दीजिए, और आप इस ये जो आपने इस प्लेस पे बांध दिया है इसको। ठीक है, और ये एक यहाँ पर बांध दिया, यहाँ पर बांध दिया है। अब आप क्या करिए, मैं येलो कलर से इस जगह डिसाइड कर रहा हूँ, ये वाली जगह और ये वाली जगह को आप नीचे खींचिए, फिर ऐसे नीचे की ओर खींचना है, तो आप देखिए कैसा बनेगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये तो बनेगा। ठीक है, यस सर। ऐसा कुछ बनेगा ना। आपने यहाँ पर बांधा हुआ है, इस जगह पर बंधा है, इस जगह पर बंधा है, इस जगह पर बंधा है, दीवार से बंधा है, और इस पार्ट को आपने इसको आप नीचे खींचे तो ये नीचे ऐसे आ जाएगा ना। ठीक है, तो आपने बिना ब्रेक किए हुए ये, सो दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब इसको आपने एक मैप देना है, तो आप क्या करिए, एक ये लाइन लीजिए, ऐसे बनाइए,
प्रोजेक्ट कर दीजिए, यहाँ से सीधे नीचे डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर दिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर ये मान लो एक्स वाई है तो यहाँ नीचे एक्स कॉमा 0 होगा। तो यू आर मैपिंग एफ एक्स वाई लाइक एक्स कॉमा 0, दिस इज 1 1 ऑन 2 एंड अभी ये एक्स वाई जो है उसमें एक कंडीशन है, ये इसके इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए आपको मालूम है, ये सारे वाई नहीं, ये केवल ये वाली लाइन पर वाई है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी। अभी इस बारे में और आप सोचिए। तो ये मैंने हिंट आपको दिया है, ठीक। So answer is these 4 lines, all these 4 lines are homeomorphic। तो ठीक है, तो अगर मैं कोई एक लाइन ऐसे बनाता हूं और एक लाइन ये बनाता हूं, so therefore these 2 are homeomorphic। इसीलिए आपने, अगर आपको याद हो, मैंने ए बी सी डी का एक आपको बना के दिया था ना। मैंने बोला था कि अल्फाबेट्स को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, याद है आपको? यस सर। जब ये क्लास शुरू हो रही थी तो उसमें आपको याद होगा सी और जी आई एल ये सब एक उसमें थे, एम। तो आप देख रहे हैं मैं बिना कुछ हटाए इसको, एक लाइन को आप इस लाइन को सी में मोड़ सकते हैं ना, आप इसको सी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप समझिए कि आपके पास एक रबर का एक स्ट्रिंग है, अब आपको उसमें एल बनाना है, तो आप इस स्ट्रिंग को इस जगह पर किसी से बांध दीजिए और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको खींच के इधर ले आइए, तो ये ऐसा बनेगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो आपको इधर से इधर पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एम बनाना तो आपके पास फिर से जो तरीका मैंने अभी बताया था, आप इधर बांध दीजिए और खींच दीजिए, ठीक है। आप एक बार में उसको बना सकते हैं। तो ऑल दीज आर सेम। अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि क्यों आई और क्यों से यू, ओके, ए और आई ये दोनों अलग अलग क्लास में क्यों है, इसका हमें रीजन देना पड़ेगा। क्यों ओ और आई अलग क्लास में है, इसका रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। इसका रीजन अभी हाँ नेक्स्ट क्लास के बाद इसका रीजन आप खुद पता कर पाएंगे। मेरे को लगता है कि अगर आप आज वाला लेक्चर अच्छे से देखें तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्यों आई और ओ अलग अलग क्लास में है। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, मान लीजिए ये दोनों सेम क्लास में होते, आई और ओ मान लीजिए सेम क्लास में होते, इफ दीज आर इन सेम क्लास, ओके, then every point of I has an image here in O। इस I के लिए ये एक इमेज होती है, इस पॉइंट के लिए ये जो रेड कलर का बना हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, I में रेड कलर दिख रहा है, O में भी रेड कलर दिख रहा होगा आपको। इसको रिमूव कर दीजिए, इसको रिमूव करिए, यहां से भी रिमूव करिए दोनों को, तो आपको I में क्या मिलेगा, I में एक छोटा सा देन एक बड़ा सा, एक डिस्कनेक्टेड सेट मिला, जबकि O में ऐसा नहीं है, O में आपको एक कनेक्टेड सेट मिला। तो आप एक पॉइंट रिमूव करने पर I के पास डिस्कनेक्टेड सेट मिल रहा था, जबकि एक पॉइंट रिमूव करने पर O एक कनेक्टेड सेट बना है। तो इसीलिए ये दोनों होमोमॉर्फिक नहीं हो सकते, these two are not homeomorphic, okay, this is the reason। आप एक पॉइंट उसमें से माइनस कर दे रहे हैं, आई में से कोई एक पॉइंट माइनस करने पर आपको एक डिस्कनेक्टेड पार्ट, एक डिस्कनेक्टेड
स्पेस मिल रहा है। वहीं O में से एक पॉइंट आप रिमूव कर रहे हैं तो आपको एक कनेक्टेड स्पेस मिल रहा है। ओके, तो देयरफॉर दीज टू आर नॉट होम्योमॉर्फिक। अब आप किसी के लिए भी देखिए, जो आप आज चेक करिएगा, वो जो कलेक्शन हमने बनाया था अल्फाबेट्स का, क्या ये प्रॉपर्टी सब जगह अप्लाई हो पा रही है? ओ के साथ हमने दूसरा कौन सा लिया था? ओ के साथ याद है आपको? ओ के साथ हमने लिया था, के साथ आर लिया था। नहीं आर नहीं, हाँ डी क्या डी लिया डी। था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओ के साथ डी लिया होगा, और वो डी ऐसा डी होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आप गूंधा हुआ आटा है ना, गूंथे हुए आटे से जो जो चीजें बना सकते हैं वो सब एक जैसा है। अगर आपने ओ बनाया है, एक आपने ये ओ बनाया है, आप ओ से डी भी बना सकते हो। क्या कह रहे हैं? क्यों हो सकता है सर? आपके पास, आपने आटा देखा, आटा गूंथा हुआ आटा, जब यस सर। आटे को गूंद लेते हैं तो उसमें आप एक ओ बनाइए, उसमें से ओ बनाइए, फिर उसी को आप हल्का एक साइड से प्रेस करेंगे तो वो डी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों सेम क्लास में है। आप कोई भी पॉइंट डी में से रिमूव करेंगे फिर से ये कनेक्टेड रहेगा। एक पॉइंट रिमूव करने पर ये हमेशा कनेक्टेड रहेगा। ये पॉइंट आप रिमूव कर देंगे, इसको नहीं रखेंगे, तब भी कनेक्टेड है। यहाँ भी ये कनेक्टेड है। इसमें 2 पॉइंट रिमूव करने पर ये डिस्कनेक्टेड बनेगा। यहाँ भी आप 2 पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिस्कनेक्टेड बनेगा। सर क्यू भी होगा इसी सेम? नहीं, क्यू नहीं होगा। क्यू में देखिए ये है और साथ में ऐसे कुछ आ जाता है ना। यस सर। है ना, ऐसा नहीं होगा। तो क्यू थोड़ा अपवाद है, क्यू इसमें नहीं आएगा। ठीक, हाँ, इसको आप थोड़ा सोचिए इस बारे में और फिर से देखिए कि क्या है। ठीक है? चलिए, आई स्टॉप हियर।